Well, it's day 2 of the monsoon session of the parliament and looks like it is going to be just as stormy as the first, with price rise and corruption and also the CAG report on the Commonwealth Games scam as the three main issues in the opposition's arsenal. The opposition gearing to corner the government over the Comptroller and Auditor General report on the Commonwealth Games scam, which is likely to be tabled in the Parliament. The report that also takes into account letters that were written by former sports ministers both Sunil Dutt and Manishankar Iyer questioning the appointment of Commonwealth Games scamster Suresh Kalmadi, currently in Tihar jail. It says that the government ignored warnings as far as the appointment of Kalmadi as the Commonwealth Games Organising Committee Chief is concerned. The report into the Commonwealth Games, which is likely to be tabled soon in Parliament, says talks about how the Prime Minister's office changed rules to suit Mr. Kalmadi taking over as the CWG chief, whereas there were letters from former sports ministers like Sunil Dutt and Manishankar suggesting that someone else be put in charge of CWG. Let the government explain one simple thing. Sunil Dutt was a dignified politician of the country, I acknowledge. He was a good minister. Why he was also overruled? Was Mr. Kalmadi so important? He is now in jail. And Sunil Dutt is no more in this world to explain. But certainly this government has a moral obligation that when his own ministers were objecting, why was Kalmadi forced? इस संसदीय दल की बैठक पहली बैठक आज हुई माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में, जहां दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष और सांसद सारे उपस्थित थे। मुख्यतः जो विषय आने वाले हैं उसके बारे में सांसदों को बताया गया और वोटिंग प्रावधान पर दो चर्चाओं की जो मांग की गई है, महंगाई और भ्रष्टाचार, उसके बारे में सांसदों को अवगत किया गया। आज दोनों सदनों में हमारा नोटिस है कि लोकसभा में प्रश्नकाल स्थगित करके महंगाई पर रूल 184 के तहत चर्चा हो और राज्यसभा में प्रश्नकाल स्थगित करके रूल 167 के तहत चर्चा हो, अर्थात दोनों में मतदान के रूल पर प्रावधानों में चर्चा हो। सरकार ने अभी तक अपना मत नहीं बताया कि वो चर्चा मतदान वाले रूल पे देंगे या नहीं देंगे, और अगर नहीं मानते हैं तो मैं पहले भी कह चुका हूं जब हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई थी कि हम सदन चलाना चाहते हैं, सदन में बहस चाहते हैं, पर अगर जिन प्रावधानों में हम बहस चाहते हैं वो प्रावधान अगर सरकार नहीं मानती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। आज संसदीय दल में अपने विचार व्यक्त करते हुए सांसदों ने अपने इलाकों के समस्याओं पर भी ध्यान